What's up, kids? Hello and welcome to next part of what I taught you in this morning, which is the Newtonian mechanics. ठीक है, पहले हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, जिसमें हमने सीखा एक ही शब्द कि ढीठपना क्या होता है कि नहीं? That is called as the Newton's first law. Now, Newton's first law, I will just give you a brief summary जो हमने last time पढ़ी थी. Newton's first law states that a body at rest will remain at rest. A body in motion will remain in motion. ठीक है, रेस्ट पे देखो बॉडी. ठीक है, माउंट एवरेस्ट पड़ा हुआ है, कितने सालों से पड़ा हुआ है, कोई हिला ही नहीं पा रहा है उसको. ठीक है, मेरे अंदर भी जान नहीं है. एंड द बॉडी इन मोशन, अर्थ को देख लो, बिलियन ईयर से घूमे ही जा रही है सन के आसपास. Newtonian mechanics. So now we will go to the second law of motion. But if you want to learn the exciting concepts, तो आप लोगों को already पता है ये बात, and I've told you many times that download the app and you will see that there are great teachers passed out from very prestigious college will be teaching you different subjects, and you will not only love that, you will enjoy it and earn rewards also. ODA class, the only class where you can get a lot of rewards and recognition. Now, six things to know. Let me just quickly erase it. Six things to know before you join the bridge course. Okay, what are those? Number one, the only platform that guarantees you that you will be given a dedicated person to help you, and we call that mentor teacher. He will be your friend, he will be your guide, who will be helping you in your classworks and homework. You will be given PDFs of whatever is taught in the class. You will be given homework assignments, subjective as well as objective, in the app only. I'm coming to the fourth point, and listen to this very carefully. I know that we are the only platform that rewards you when you give right answers. So you will be earning a lots and lots of coins. Kids who are already there on ODA platform knows it, right? Now, coming to the next part, if you want to enroll, there is a link given in the description box. You will also find another link of my first video in the description box, and you can revise Newton's first law from there. Now click on the icon and enroll yourself for just rupees 29. As most of you already know me, my name is Yogesh Malhotra. I graduate from NIT Surathkal. When I graduated in 2014, the system, the thinking was very different. Okay, and I have come a long way after learning through it and mentored more than 80,000 students. And I'm very, very happy to tell you that I will be helping you out as well. So let's move on to most important part. Now, again, a quick recap, which I already told you, that there are four fundamental forces in nature. Okay? And we have done a whole session on it. I'm sure you remember. If you don't, again, you'll find the link in the description box. First is called as, my bad, the first is called as strong nuclear force. क्या काम था न्यूक्लियर फोर्स का, याद करो. The only purpose of this force is to make more and more matter. The only purpose of this force is also same. The only purpose of this force is to break the atom and convert it into energy. और ये क्या है, ये चिल बंदा है. ये बोलता है अपन दो काम करेगा, मैं तोड़ूंगा भी और मैं जोड़ूंगा भी. So when it comes to the strongest to weakest, we already know that nuclear force is the strongest nuclear force, strongest force in the nature. That is why atomic bomb, hydrogen bombs, all these nuclear bombs are based on this force. Coming to the next part. Okay. So as I told you, Newton gave three laws. The first law is the law of inertia. A body will remain at rest or will keep on moving until or unless external. जब तक कोई बाहर से धक्का नहीं मारता, मैं ढीठ बन के पड़ा रहूंगा. अरे हाँ ना बोलो, right? Second, Newton the second law. This is very important. ठीक है. Now we all know the harder you push, तुम जितना ज्यादा धक्का लगाते हो उतनी ज्यादा तेजी से चीजें चलती हैं, है कि नहीं? ठीक है. अब सपोज करो कि मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इसको फेंक सकता हूं धीरे से, ये इधर तक जाएगा. मैं इसको फेंक सकता हूं पूरी जान से, हो सकता है कि रूम वूम तोड़ दे. ठीक है, या हो सकता है कि दीवार के अंदर कोई छेद वेद कर दे. समथिंग कैन हैपन. So that was the second law. The higher force you apply,
द मोर फास्टर इट विल गो। ठीक है, ए क्या है? एक्सेलरेशन। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में। नाउ फाइनल न्यूटन का थर्ड लॉ, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है। अगर आप टेबल को थप्पड़ मारते हो तो टेबल भी आपको थप्पड़ मारती है, क्योंकि अल्टीमेटली दर्द आपको होगा। टेबल विल बी लाइक मैं, डजंट मैटर एक्चुअली। ठीक है, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट रिएक्शन। दिस विल बी डन in next video in detail. So let's quickly understand two terms that we have to follow if you want to become an IITian. The first is called as balanced force. The other is called as unbalanced force. What do I mean by balanced force? So assume I have this remote control currently in my hand. It's beautiful, it's nice. If I push it, it will move. So suppose I am pushing it with 10 newtons of force in this direction, but my right hand says, why not have fun? Let's do it from here also. So I apply force 10 Newton here, 10 Newton here. So if both the forces are equal, the remote will remain in the center. This is called as balanced force. Okay, I will not tell you about the description of it, but we can understand it in a very simple way. If the force applied by this man is 10 Newton and the force applied by this woman is also 10 Newton, then the body will remain what? It will remain in rest. This is called as balanced force. Now assume that we removed her. In case 2, we have removed her. So what do we get? We just get the boy who is pushing it. And when he pushes it and there is nobody to stop him, this makes it an unbalanced force. And unbalanced force will force the body to move. अरे हाँ ना बोलो यार। अगर अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाई है, अनबैलेंस का मतलब क्या है? दूसरी साइड से कोई है ही नहीं बैलेंस करने वाला। अगर तुम फोर्स लगाओगे तो क्या वो बॉडी चलना शुरू हो जाएगी? यस, एब्सोल्युटली। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सेलरेशन। भाई मैं तो बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाता हूं और मैं बहुत सिंपल तरीके से याद रखता हूं। न्यूटन का सेकंड रूल कहता है मा रूल। मा रूल का मतलब क्या है? F इक्वल टू एम इंटू ए। कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी रेड है, पेन भी रेड है, कंफ्यूज मत हो जाना। It says that force is equal to mass into acceleration. And I told you कि मैं acceleration बताऊंगा क्या होता है। Acceleration is how fast a body can change its velocity. अब पापा गाड़ी चलाते हैं, मम्मी गाड़ी चलाती है, ठीक है। चलो बड़ा भाई बड़ी बहन वो भी हैं, वो भी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। पापा गाड़ी चलाएंगे मीडियम तरीके से। बड़ा भाई एक बारी पैर रखेगा एक्सेलरेटर में, भे भागना शुरू हो जाएगी गाड़ी। The car will start to run very quickly. That is called as high acceleration. मम्मी क्या है? मम्मी will care about you. She will move a little slowly. That is called as lower acceleration. ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे स्पीड चेंज कर रही है। So according to the second law of motion, force on any object is multiplication of mass and acceleration. ठीक है। Now look here very carefully. ये बॉल है, this is a ball. Now a ball must be having some mass, right? And it should be fixed. वो फिक्स होगा। भाई बॉल का मास अगर 1 किलो है तो आधे घंटे बाद भी 1 किलो रहेगा, 2 घंटे बाद भी 1 किलो रहेगा, 3 घंटे बाद भी 1 किलो रहेगा। मेरे को पता है द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क, सर व्हाट इफ हवा उसमें से निकल गई? एज्यूमिंग दैट एयर इनसाइड इट इज कांस्टेंट। नाउ इसका मास कांस्टेंट है, तो बहुत सिंपल आंसर बताओ मेरे को। अगर मैं तेज मारूंगा तो क्या बॉल तेज जाएगी या धीरे जाएगी? और इसका बहुत सिंपल आंसर क्या है कि सर बॉल तो तेज जाएगी। So that's what Newton said. Newton said कि acceleration is directly proportional. Directly का मतलब क्या है? सीधा सीधा। डायरेक्टली का मतलब क्या है? सीधा सीधा। तुम जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे मैं उतनी तेजी से जाऊंगी। ये कहती है बॉल किसको? तुम्हारे पैर को। और ये बात समझा कौन अच्छे से? रोनाल्डो। बिल्कुल, हर फुटबॉलर बेसिकली। सो द होल पॉइंट इज दैट you have to understand force
this is a symbol of direct proportionality to acceleration. When mass is constant. कांस्टेंट का मतलब क्या है कि एक ही वैल्यू है मास की. मास ऐसा नहीं है कि वो वही या तो बढ़ते जा रहा है या वो घटते जा रहा है. इट इज कांस्टेंट. इट हैज टू बी वन फिक्स्ड मास, लाइक आई सेड अबाउट द बॉल. चलो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर होती है. कभी कभी आपने देखा होगा कि मास सेम नहीं रहता, और इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? रॉकेट. नाउ व्हाई विल आई गिव द एग्जांपल ऑफ रॉकेट? क्योंकि रॉकेट के अंदर दो ह्यूज टैंक्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ फ्यूल, जो यूज होके गिर जाते हैं. यूज होके क्या होते हैं? गिर जाते हैं. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट? अब ध्यान से इसको समझते हैं हम लोग. इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब हो सकता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास. इसका मतलब क्या है कि मैं धक्का तीन चीजों को लगा रहा हूं. ध्यान से समझना, मैं धक्का जो है तीन चीजों को लगा रहा हूं, और क्योंकि मेरी पावर तो सीमित है, मेरे अंदर एनर्जी धक्का लगाने की इज कांस्टेंट. मैं बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, बहुत कम भी नहीं कर सकता. ठीक है. सो बहुत सिंपल तरीका ये है. एक मैंने लिया 1 ग्राम का बॉक्स और मैंने इस पे लात मारी, आई किक्ड इट. और एक मैंने लिया बॉक्स 100 किलो का, और इस पे लात मारी. किसमें मेरा पैर टूट जाएगा? भाई ऑब्वियसली 100 किलो में. और इन अनदर वेज, इन दोनों में से कौन तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा? 1 ग्राम वाला या 100 kg वाला? द आंसर इज 1 ग्राम. ओके. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड. जब जब फोर्स कांस्टेंट होती है, फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आप जो फोर्स लगा रहे हो उसको आप ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो. यू कैन नॉट चेंज इट ऑल. For example, me, I can, let's say if somebody asks me what is the maximum force you are applying, and I am applying my maximum, I cannot apply more than that. So that makes it acceleration is inversely proportional to mass. इसका मतलब क्या है? जितना कम मास होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगा. ये तो अब आप बोलोगे हाँ सर, ये तो हम रोज ही देखते हैं, हल्की चीजें तेज भागती हैं. दैट इज अ फैक्ट. हल्की चीजें तेज भागती है. मास एंड एक्सेलरेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. नाउ अब एक तीसरी चीज भी तो हो सकती है, टेबल क्लॉथ ट्रिक, इनर्शिया वाली. ठीक है, इसको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करते हैं. पहले हम देखते हैं दो टाइप की प्रोपोर्शनैलिटी. पहली है डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी. जब मास कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट, व्हेन मास इज कांस्टेंट, तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी तेजी से जाएगा. इसके अंदर क्या है? व्हेन मास इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स इज कांस्टेंट. फोर्स कांस्टेंट मतलब लगाने की क्षमता, फोर्स यानी कि एनर्जी या फोर्स, धक्का लगाने की क्षमता या खींचने की क्षमता आपकी सीमित है, इससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते. सो जब फोर्स इज कांस्टेंट, तब एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इज व्हाट? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. अरे हाँ ना बोलो यार. प्रेस 1 इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. नाउ ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. एक बहुत अच्छा डायग्राम है. ठीक है, इसको बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं हम लोग, समझते हैं इसके बारे में. एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए, मास कांस्टेंट, फोर्स. इफ दिस इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, then force is directly proportional to acceleration. The higher force you apply, the faster the body will move. Okay, I hope you have understood this part. Let's give an example.
You can see over here there are four different types of balls. Look here, this is moving at 30 kilometer per hour. This is 25. This is 20. This is 10. Which one of them has got higher force? अब आप बोलोगे सर इसके अंदर मास है बट एक्सेलरेशन तो है नहीं, ये तो इनकी स्पीड है। ये क्या है? ये इनकी स्पीड है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि टाइम जो है हमने 1 सेकंड का ही लिया है। हम टाइम 1 सेकंड से ज्यादा का ले ही नहीं रहे, ठीक है? या फिर 1 घंटे का ही ले लेते, 1 आवर, 1 आवर, ठीक है? अब ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना। द लास्ट वन हैज 4 kg and is moving with 10 kilometer per hour, and this one is 650 gram, not even 1 kg. This is 170 gram, this is 56 gram. So obviously you can see that I told you higher mass, look here, but they have different speed, okay? So let us understand how can we solve this in a very simplistic way. I told you take the time 1 hour. So acceleration is equal to, let's say they all stop after 1 hour. So acceleration will come out to be their speed but only hour square. So its acceleration will be 30 kilometer by hour square. This is 25 kilometer by hour square. This is 20 kilometer by hour square, and this is 10 kilometer by hour square. Now you know the acceleration, so I give you homework. Force is equal to mass into acceleration. You know acceleration, you know the masses of each one of them. Do this and write your answers in the comment section after you have solved this question, and I will give you the answer in the next class. But here is an idea. The higher mass and the higher velocity will keep on moving up. Will keep on moving what? Keep on moving up. Now, this person is pushing the cart. He is applying what? Force. Due to which what is happening? This mass is gaining acceleration. Yes or no? Okay? Now, let us understand. Which of these vehicle will require more force to move at different speed limits? Okay. Now look here. There is a small car. There is SUV. There is a truck. Who is heavy? Of course, truck is heavy, right? So in order for truck to move at this speed, it will have to apply more power, more force. And a car to move at this speed, it has to apply less than truck but more than small car. Okay, press 1 if you understood all these parts. Now that you have understood, the last thing you want is to practice, right? And the best platform to practice that is ODA Class app. So download quickly ODA Class app. The link is given in the description box. And 6 things, like I've already said, to know before enrolling into the bridge course. You will be given a dedicated person to help you throughout your journey of learning. 3 maths, 3 science classes. There will be a personal teacher support, PDF books, and the course material which has been taught in the class. All this for a very small amount of just rupees 29. The link is given in the description box. You can click and enroll quickly. But before I go, of course, ODA Class rewards all the students who study with them on their platform. So we give you coins. Now, you might think, sir, what will I do with ODA coins? So ODA coins are used to redeem the gift. You can get a bottle, which is a smart bottle. You can get MI band, you can get a sound bar, and you can get a Redmi phone. So all this is possible and within reach of your hands. Just download the app and quickly enroll into the bridge course. This brings me to the end. So quickly like, share and subscribe our channel with your friends and share it on the WhatsApp also. Till then, see you kids. Ciao.